गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है हाउ टू सेट्स लिमिट्स इन ऑटो कैड में कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हम नई शीट खोलते हैं तो उसकी लिमिट सेट की जाती हैं, क्योंकि ऑटो कैड फाइल जो है, जो शीट होती है, ये अनलिमिटेड होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स अगर आप ज़्यादा काम करते जाएंगे तो फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह आपने ड्रा किया है तो आपको फाइंड करने में मुश्किल हो जाएगी। जब आप लिमिट सेट करेंगे तो हमारा ये एरिया होगा, जब हम इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो यानी किसी भी जगह पे गायब हो सकता है। तो उसको वापस यानी अपनी ड्राइंग शीट को लाने के लिए हम जूम करेंगे, जूम ऑल करेंगे तो हमारा वही इंटायर एरिया आएगा जो हमने लिमिट सेट की होगी। ओके, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। AutoCAD ट्यूटोरियल वीडियो 2, हाउ टू सेट्स लिमिट्स ऑफ ड्राइंग शीट्स प्रायर टू स्टार्ट वर्क। तो लिमिट्स कैसे सेट करनी है, बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में लिमिट्स LIMITS लिमिट्स इंटर, उसके बाद 0,0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर अपर लेफ्ट कॉर्नर इंटर 5 meter into 7 as per your plot dimension, as per your paper size. You can whatever the size you want, you can write, you can put and you can make the sheet accordingly. उसके बाद zoom के लिए Z enter, all के लिए A enter. I will teach this command as well. ये कमांड भी हम बाद में दोहराएंगे. We can set the limit as per our plot size, papers any size. So let's move to the sheet. I have already opened the sheet. So how we should set the limits, and what is the benefit to set the limits, I will show you here. LIMITS limits enter. Here you can see 0,0 limits specify lower left corner. So here we will write 0,0 enter. Now limits specify upper right corner. Here we will set the size. So 5,000 into 7,000. So now for zoom Z enter, all के लिए यहाँ देखें, all के लिए zoom all A देखें इधर आ गया है A enter. Now we can check as well with the line command as well, from here to here 7,000. Okay, so what is the purpose of this? Suppose that I draw few objects here. Suppose that I am working on any drawing. So you can see here, suppose that this is also the part of the drawing. Now when I will scroll out, you can see this is scroll out. You know how you will see here and there. Then you will write Z enter, A enter, so it will come. So this entire area has been set on the screen as per your dimensions. So I hope this video is very useful for all of you. If there is any comment, you can write down the comments box. So thank you very much.